Hello, assalamu alaikum. Can you hear me, Anna? Yeah, I can. Can you hear me? Yeah, great. Okay, sorry for the delay, everyone. We were just facing some issues. So, assalamu alaikum, and a very warm welcome to everyone who has joined us today. Welcome to the very first live session, which has been which is being hosted by Medsphere, powered by doctors. And the topic of today's session is on World Autism Awareness Day. United Nations General Assembly unanimously declared 2nd April as World Autism Awareness Day to highlight the need to help improve the quality of life of those with autism so they can lead full and meaningful lives as an integral part of society. The rate of autism in all regions of the world is high, and the lack of understanding has a tremendous impact on the individuals, their families, and communities. For 2021 and 2022, the UN decided on inclusion in the workplace, challenges, and opportunities in a post-pandemic world as the theme for the World Autism Awareness Day. Today in our live session, we'll be discussing all about autism awareness. In this session, we will try our best to guide parents and our physicians and answer as many questions as we can related to the topic. We will also be taking live questions towards the end of the session. Today, let me introduce my guest today. We have with us Dr. Anum Farooqi. She's a third-year psychiatry resident at JPMC Karachi. After completing her MBBS from Dow University of Health Sciences, she got her training at Civil Hospital Karachi, and after working there for 2 years, she started her FCPS Part 2 training in psychiatry at JPMC Karachi. She is experienced in dealing with a wide variety of disorders, including to anxiety, depression, autism, dementia, panic disorders for both children and adults. So very warm welcome, Dr. Anum. Thank you so much, Murwah, for inviting me for the session. So let's start our session. So Anum, since you know the topic of the session is autism, so I want to begin this session by asking you if you could tell everyone what exactly autism is and what are the early signs of autism. What exactly autism is? Basically, autism is a developmental disorder. By developmental, I mean it is present throughout the development of a child. In another word, it is present at birth. However, it might not be very evident or might not manifest all the signs and symptoms at birth. Usually, जब parents ये note करना शुरू करते हैं कि there is something wrong with their child, it is about 2 years of age. When the child is 2 years of age, उनको ये notice होना शुरू होता है कि the child is not normal. By not normal, I will come to your next question. What are the early signs of autism? So the earliest signs of autism जो parents note करते हैं, lack of eye contact. Okay. बच्चा parents का eye contact नहीं करेगा. When they look at them, the child tends to look away. Secondly, lack of social smile. 6 weeks, by 6 weeks एक normal development अगर बच्चे की हो रही हो तो वो social smile देना शुरू हो जाता है. इसका मतलब कि they tend to smile back when a parent is smiling at them. But children with autism lack this feature also. Thirdly, they hesitate to communicate with other people. Okay. Basically, अगर हम autism, हम diagnostic criteria के तो detail में मैं नहीं जाऊंगी, but there are 3 things that you want to look out for children in autism. सबसे पहले they have disorders in their social interaction. By interaction, I mean वो mingle करना पसंद नहीं करते. They do not like to meet with people. आसपास के जो 2-3 लोग हैं वही उन्हीं में they feel comfortable. When they are introduced to strangers, they feel uncomfortable. Second, they have disorder in their communication. A wide number of children with autism tend to have language delays. While I'm saying a wide number, it does not necessarily be present to diagnose a child with autism. लैंग्वेज डिले का होना ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म के साथ होते हैं दे टेंड टू प्रेजेंट विद लैंग्वेज डिले, एंड कभी कभार ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है पेरेंट्स की विच ऑटिज्म के जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं उनके पेरेंट्स की कि ये बोल नहीं सकता ठीक से. थर्डली, दे टेंड टू हैव रिपीटेड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर एंड इंटरेस्ट. What do I mean by repetitive behavior and interest? The word autism, it comes from auto. Auto means self. They tend to be वो बिल्कुल अपने आप में गुम होते हैं.
Okay. I won't say कि they're obsessed or they are self-centered, but वो अपने एक सर्कल होता है, उसमें वो अपने ही आप में मगन होते हैं, वो अपने खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, उनका एक सर्कल होता है जिससे ना वो बाहर निकलते हैं ना वो उसमें किसी को आने देते हैं. उनके पर्टिकुलर टॉयज होते हैं, उनकी पर्टिकुलर चीजें होती हैं, दे हैव पर्टिकुलर फूड इंटरेस्ट, दे हैव पर्टिकुलर कार्टून्स ऑन टीवी विच दे वॉच. और अगर इसमें कोई भी तब्दीली आती है तो हर बच्चा डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है, बट एक जो सिमिलैरिटी ऑटिज्म वाले बच्चों में है कि दे टेंड टू गेट अनकंफर्टेबल, सम थ्रो टैंट्रम्स, सम प्रेजेंट विद Okay. लो मूड, सम बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को. So these are the ठीक है. early signs that a parent can look for in children with autism. ठीक है. तो डॉक्टर अनम, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई रिस्क, आर देयर रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑटिज्म, लाइक इज इट जेनेटिक, या किसी के अगर आपके पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को था, आपकी आगे Hmm. जनरेशंस में ये क्या ट्रांसफर होगा नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके? So Marwa, when we talk about risk factors, autism is a multifactorial disease. ओके. By saying that, I mean I cannot pinpoint one single factor कि इस वजह से autism होता है. It is a combination of factors, the most important being genetics. ओके. Undoubtedly, genetics play a very and maybe the most important role in displaying the disease. Various studies have shown कि फैमिली में अगर ऑटिज्म हो तो देर आर चांसेस कि फैमिली के दूसरे बच्चों को या सिबलिंग्स को ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अबाउट 50 to 75% बढ़ जाते हैं चांसेस. इससे ज़्यादा अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हों, उसमें भी बाय मोनोजाइगोटिक ट्विंस आई मीन आइडेंटिकल ट्विंस हों, तो उसमें भी ऑटिज्म के चांसेस अगर एक सिबलिंग को हो तो दूसरे ट्विन को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ये तो बात हो गई जेनेटिक्स की. सो फार जो प्रूव हो चुकी है ना स्टडी से वो सिर्फ जेनेटिक्स है, बट देन देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, दे आर बीइंग स्टडीड राइट नाउ बट नन ऑफ देम हैव बीन प्रूवन, जिसमें पैटर्नल और मैटरनल एज के बारे में भी बात होती है. Some say कि advanced paternal age is a very big risk factor. Some say that maternal age also matters. Prenatal development और for example कि अगर mother is suffering from gestational diabetes, has suffered certain infections during pregnancy, then the child is at risk of developing autism. Perinatal complications, for example अगर आपको bleeding, जो mother को bleeding हो गई है during birth, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल पैदा होते ही बच्चे का एबगर स्कोर 5 मिनट्स का अच्छा नहीं है, या फिर कुछ पोस्टनेटल डेवलपमेंट्स, पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस बच्चे ने डेवलप कर लिए हैं, तो देर आर चांसेस कि बच्चा ऑटिस्टिक निकल सकता है. ओके. बट अगेन ये जो चीजें हैं ये प्रूवन नहीं है. जो एक वाहिद चीज प्रूवन है दैट इज जेनेटिक्स, दैट जेनेटिक्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके. My next इसके question for you, Dr. Anam, is, yeah, you want to say something? Yeah, please. Yeah, there are some epidemiological findings as well that boys are 4 times at higher risk of developing autism than girls. By that, Okay. I do not mean कि girls do not develop autism. हाँ, but ऐसा जरूर होता है कि लड़कियों में autism इतना evident नहीं होता जितना लड़कों में होता है. और इसके Okay. अलावा as I already mentioned कि लड़कों में autism 4 times ज़्यादा common होता है as compared to girls. Okay. Great. ठीक है. My next question for you is कि do we have any screening tools या कोई lab test है specific जो autism को diagnose कर सकते हैं? And also if you can mention again कि what is the age जब correct diagnosis can be made for autism? Okay, to answer your question about age, as I already mentioned, it gets very evident at around 2 years of age. Okay. लेकिन देखो ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर. ठीक है. ये जो मैं 2 years बता रही हूँ एक एवरेज एज है, ये एक मीन एज है कि जब ऑटिज्म यूजुअली देखा गया है कि एविडेंट होता है जब पेरेंट्स नोट करना शुरू कर देते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर चाइल्ड. अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो ये पहले भी डायग्नोज हो सकता है एज अर्ली एज मे बी 6 months of age, because the child has not yet developed social smile and it does Right. not respond to his or her name, and it does not ठीक है. maintain eye contact with the parent or does not respond to sounds. और अगर इसके साइंस बहुत ज्यादा माइल्ड हों, आप बहुत मेरे ख्याल है कि ये काफी कॉमन वर्ड है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म. बाय हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वी मीन कि जिनका इंटेलेक्चुअल
क्वेश्चन यानी IQ 70 या 70 से अच्छा होता है, उनमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल चाइल्डहुड तक ऑटिज्म डायग्नोज नहीं होता। और जब ओके ऑटिज्म डायग्नोज, जब उनकी सोशल और एकेडमिक डिमांड्स बढ़ने लगती हैं और बच्चा उससे कोप अप नहीं कर पाता, only then it becomes evident that the child is suffering through autism. ओके And your next question was about the screening test and या लैब in short, टेस्ट how can we diagnose autism? So, या मरवा, unfortunately कोई ऐसा लैब टेस्ट तो नहीं है जिससे हम ओके ये डायग्नोज कर सकें कि इस बच्चे को ऑटिज्म है. There is no, as yet, there is no blood marker, there is no brain ओके imaging, there is no blood test to prove that the child is suffering through autism. It is mainly clinical. ओके Secondly, we have some screening tools or scales or standardized test questionnaires that we can apply on children. And by ओके scoring, we can know that if a child is suffering through autism or not. And we can even characterize them into mild, moderate or severe. ये ओके स्क्रीनिंग टूल क्लिनिशियन बेस्ड भी होते हैं, क्लिनिशियन भी अप्लाई कर सकता है, और कुछ स्क्रीनिंग, देयर आर मेनी अवेलेबल, बहुत अच्छे ओके अच्छे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं, और कुछ इतने सिंपल भी हैं कि इवन पेरेंट्स भी अप्लाई करके दे कैन हैव एन आइडिया. आई एम नॉट सेइंग दैट दे कैन ओके डायग्नोज द चाइल्ड, बट दे कैन हैव एन आइडिया कि वेदर दे शुड गेट एनी हेल्प और नॉट. ओके my next question is, what are the different treatments available for autism? Like, अगर आप कोई पाकिस्तान में स्पेशली कोई सेंटर्स हैं जैसे जो डेडिकेटेड हो सिर्फ ऑटिज्म के लिए? सेंटर्स बहुत सारे हैं. आई विल शेयर अ लिस्ट विद यू. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ सोशल सर्विसेज. बहुत ओके सारे कराची, ओनली इन कराची देयर आर एटलीस्ट 20 to 25 सोशल सर्विसेज दैट डील विद सच चिल्ड्रन. और ओके ऑटिज्म इस एक सोसाइटी भी ऑटिज्म के नाम से. वी हैव NGOs, वी हैव प्राइवेट, वी हैव गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दैट कैन हेल्प विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. बट आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था. Autism is a lifelong disorder. ओके When I say it is a lifelong disorder, I do not by any mean hope खत्म करने का मेरा कोई मतलब नहीं है. There is always hope. जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात है, मेडिकेशंस के से इसका ट्रीटमेंट नहीं है. What we can do, सर्टेन थेरेपीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं. ओके ये थेरेपीज बिहेवियरल थेरेपीज भी होती हैं, ये स्पीच थेरेपीज भी होती हैं, ये फैमिली थेरेपीज भी होती हैं टू हेल्प पेरेंट डील विद देयर चाइल्ड विद ऑटिज्म. ओके बिकॉज ऑटिज्म के साथ अब जब हमने जब शुरू में बात की थी कि ऑटिज्म के साथ जब बच्चा आता है तो दे हैव डिसऑर्डर इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर. सो इन्हीं को लेके अगर हम चलें तो इसी के लिहाज से थेरेपीज होती हैं. अगर बच्चा लैंग्वेज डिले के साथ आ रहा है तो ही शुड बी रेफर टू ए स्पीच थेरेपिस्ट. अगर बच्चा ओके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है तो देयर आर सर्टेन बिहेवियरल थेरेपीज दैट वी कैन डू, एंड देयर आर मल्टीपल सेंटर्स. आई विल बी हैप्पी टू शेयर द लिस्ट विद यू. इसके ओके अलावा parents can be guided as well as to how they can go on with their children, because sometimes caregiver exhaustion बहुत common होता है, and they ओके need help. They need राइट certain groups. They need guidance as to how to deal with their children. तो वो भी बहुत राइट easily available होती है. ओके अच्छा, there are a lot of myths related to autism. If you could just tell me कि ये myth है कि ये एक fact है इसके बारे में. What do you, when I say vaccines cause autism, is it a myth you think? Yeah, is it true? एक्चुअली अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं मरवा, तो जब ये ज्यादा डिसऑर्डर्स ना बहुत ज्यादा पुराने नहीं है. ADHD, ऑटिज्म, ये Okay, इनकी ज्यादा सरफेस पे आना शुरू हुए थे 1980s के बाद. okay, अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 1960s के बाद. और कोइंसिडेंटली ये वो टाइम था जब कुछ वैक्सीन्स भी डिस्कवर हो रही थी. ठीक है. ठीक है, तो कुछ लोगों ने इनका एसोसिएशन इस तरह से देखा कि व्हेन द वैक्सीन इज बीइंग अप्लाइड, और उसी जमाने में ऑटिज्म जो है ये सरफेस पे भी आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ, तो उन्होंने एक ऐसा एसोसिएशन बना दिया. ऑल्दो Okay. व्हेन इट वाज स्टडीड इन डिटेल, रिसर्चेस वर बीइंग डन, तो ये प्रूवन बात है. यू कैन फाइंड रिसर्चेस ऑन नेट कि दिस इज अ टोटल मिथ. वैक्सीन Okay. और ऑटिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है. दिस इज अ मिथ. Yeah, so this gives a very clear message to whoever who's watching us कि vaccines को delay मत करें. Don't say no to vaccines because it has nothing to do with autism. My एग्जैक्टली. next myth to what I came across was कि autistic people have an intellectual disability and they can't speak. Is it true या ये myth है? इसको clarify करेगा please. Now that's a tricky one.
Okay. जब देखो ऑटिज्म, एज आई मेंशन कि ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम. Hmm. ऑटिज्म में जो बहुत वेरिएबल साइंस और सिम्टम्स होते हैं. अ चाइल्ड विद ऑटिज्म कैन आल्सो प्रेजेंट विद एपिलेप्सी. A child Okay. with autism can also present with other neurological disorders. In fact, अगर बच्चे में कोई और neurological disorder हो तो there are chances कि autism उसको हो सकता है. Similarly, Okay. a child with autism can also present with intellectual deficit. By ठीक है. saying that, I do not by any means, I'm not saying कि हर बच्चा जो autism के साथ आता है उसे intellectual Hmm. disability होती है. Similarly, हर intellectually disabled बच्चे को autism नहीं होता. But Okay. definitely there is a certain percentage of children with autism जो intellectual deficit के साथ present कर सकते हैं. So I wouldn't say that it is a total myth, but हाँ, I would like to clear कि there is a chance कि आपके बच्चे को अगर autism है तो उनमें intellectual deficit हो सकता है, but ऐसा Right. 100% नहीं होता. Okay. And what about they can't speak? मतलब ये भी कितने cases में if it's true तो है या नहीं? देखो 25% ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो शुरू में कुछ सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलप करके फिर उनका Hmm. लैंग्वेज में डिक्लाइन आ जाता है. 25% Okay. बच्चों में ऐसा होता है. देन देर आर Okay. अनदर सेट ऑफ चिल्ड्रन जो कभी लैंग्वेज डेवलप ही नहीं करते. Okay. बट देन देर आर सम चिल्ड्रन जिनका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता है और उसी लिहाज से उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है. बाय प्रोग्नोसिस आई मीन आउटकम. दे टेंड टू Okay. हैव एन ऑलमोस्ट एवरेज लाइफ अगर उनका कॉग्निशन से मेरा मतलब है इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस, और अगर उनकी स्पीच अच्छी हो तो फिर वो Okay. एक ऑलमोस्ट एवरेज लाइफ गुजार सकते हैं. तो या देर आर सम परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक विद ऑटिज्म. Okay. The next myth is bad parenting can cause autism. How true या क्या myth है ये? कितना इसमें उसका link है? Okay, that's the most ruthless thing that can be said Really? about Okay. parenting Okay. autism, Okay. because this is a total myth. ठीक है. uh, इस पे भी there are many studies. Anyone can go and search on Medscape or wherever they want to. There is no association between the parenting style and autism. As I already mentioned, autism is a genetic disorder. It is present at birth, so there is no way that your parenting style, the way you bond with your children, the amount of love you give to your children can in any way affect, Hmm. can in any way bring out autism in a child, because it is Right. always already present at birth. हाँ, ये जरूर है, having said that, ये जरूर है कि आपके घर का अगर सपोर्ट अच्छा हो तो बच्चे का आउटकम बेहतर हो जाता है. Okay. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब एनी पेरेंट शुड बी हेल्ड गिल्टी या दे शुड फील Hmm. गिल्टी बाय द सोसाइटी और बाय देमसेल्फ कि हमारी Hmm. वजह से बच्चे को ऑटिज्म हो गया. दैट्स द मोस्ट सैडेस्ट थिंग a Okay. parent can go through, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने challenges से गुजर रहे होते हैं. ये mom guilt और dad guilt is the first thing they should get rid of. Right. The next question is, what do you have to say to the parents of autistic children? Like, what can parents do to make it better? अगर आप कुछ suggestions, कुछ tips share करना चाहें, what kind of support they can lend to their kids? First of all, होता है ना जहाज में जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो मास्क गिरता है, तो द अनाउंसमेंट से इसके पहले खुद मास्क पहने उसके बाद बच्चे को पहना है. So the Right. parent, सबसे पहले they should be very careful about their own mental health. जब उनका Okay. अपना ग्लास फिल नहीं होगा, they cannot fill any other glass. First of all, Right. they should take care of themselves. Caregiver exhaustion is very real. I have seen parents suffering. Hmm. What they can do is they can reach out to certain centers, certain groups, certain respite care even, and bond Okay. with other parents having autism. It does help a lot. When they ventilate their feelings, they tend to Hmm. feel better. इसके Okay. अलावा I would say regarding children, give it time. It is a bumpy road. ये इसका ग्राफ ऊपर नीचे आता रहता है. Some days are better than other, but always Okay. have hope. There is light at the end of the tunnel. इसके अलावा Right. जो दो तीन चीजें they can do is के be very specific about their routines and focus on the positive. Like if your child is doing something good, then reward. ठीक है. Reward and say that बच्चों को appreciate करें. इसमें reinforced होता है ये behavior. They tend to Okay. repeat positive behavior if they are being appreciated for that.
इसके अलावा that's pretty much it they can do, because it is Okay. so difficult to squeeze in one session. Autism is a very big topic, but that's pretty much Right. it. Okay. If you would like to share some tips for all the physicians, like especially जितने भी general physicians, क्योंकि first जो आता है patient वो एक GP के पास जाता है, तो अगर उनको आपको एडवाइस देना चाहें रिगार्डिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के, मतलब उनके पेरेंट्स को वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से उनको काउंसिल किया जा सकता है फॉर आवर फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस, किस तरह से उनकी अप्रोच होनी चाहिए? मैंने पहले मेंशन किया था कि ऑटिज्म इज अ रिलेटिवली न्यू डिजीज, राइट। ठीक है, तो देयर इज स्टिल सो मच स्टडीज गोइंग ऑन इन इट, अभी तो बहुत रिसर्चेस चल रही हैं, तो अभी साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट खुद बहुत ज्यादा अट्यून्ड नहीं है इस डिजीज से. देयर आर सर्टेन चाइल्ड साइकेट्रिस्ट इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड जो कि बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं, बट पूरी साइकेट्री फ्रेटर्निटी में भी अभी ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. So what general physicians can do, that I have already mentioned the early signs, and I can share a booklet with you as well, if you would like to circulate it. If they notice those signs in children presenting to their clinic, what they can do, the best they should do is to refer them to a specialist. ठीक है. There is no harm in applying certain scales, certain psychometric tools, certain diagnostic tools, which I think a pediatrician should definitely have them in their clinics. वो अप्लाई करके देखें, अगर उनको लग रहा है कि they are falling on the spectrum, then they should refer to a specialist, because only a specialist can for sure tell them कि आगे किस तरह लेके चलना है. And as I mentioned कि इसका कोई pharmacological treatment तो ऐसा definite नहीं है, साइकोलॉजिकल या साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही बेटर होता है. एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि व्हेन आई सेड कि कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटिज्म के बच्चों में कोई दवा नहीं दी जाती. ऑटिज्म के बच्चे कई दफा बिहेवियरल सिम्टम्स के साथ आते हैं, इंसोम्निया के साथ आते हैं, एज आई मेंशन सीजर्स के साथ आते हैं, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दी जाती है एंड इट शुड बी गिवन. बट इसके क्योर के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज नो मेडिकेशन. There is nothing specific for autism, सिर्फ symptomatic treatment ही दी जाएगी अगर दी जाएगी. When it comes to medication, there is nothing specific. Right. अच्छा, also nowadays, like within my friends, family, मुझे like what I have noticed is, and a lot of other people have also noticed is कि every other child is being diagnosed as having autism, या फिर like you know somewhere on the autism spectrum disorder. Like, do you think बहुत जल्दबाजी हो रही है in labeling the children as being autistic, या क्या है? बेसिकली मरवा, मैंने 2-3 बार पहले भी जिक्र किया है कि इट इज अ रिलेटिवली न्यू डिजीज. जब कोई न्यू डिजीज आती है तो उसके डायग्नोसिस में सर्ज भी आता है, उसके इंसिडेंस में सर्ज आ जाता है, दैट वी हैव सीन. बट आई वुडंट से दैट इट इज ओवर डायग्नोस्ड. ओके, आई विल नॉट से, बिकॉज यू नो जब ये 1980s में ऑटिज्म डायग्नोज होना शुरू हुआ था, इससे पहले भी बच्चे ऐसे साइंस के साथ प्रेजेंट करते थे, एंड दे वर बीइंग डायग्नोज्ड एट चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया. Okay. And that is such a heavy diagnosis. I would still say that being diagnosed at autism spectrum disorder is much better than being labeled as childhood schizophrenia. Okay. So I wouldn't say it is overdiagnosed. Awareness बढ़ रही है, physicians में भी, लोगों में भी, parents में भी, and शायद अगर इसके जो false positive rates बहुत कम होंगे. Right. अब और ये जैसे मैंने कहा ये स्पेक्ट्रम है ना, तो it can be mild to it can be severe too. हो सकता है माइल्ड वालों में थोड़ा हो कि आप ज्यादा डायग्नोज हो रहे हो, बट आई वुडंट से दैट फॉर मॉडरेट और सिवियर केसेस. Right. Acha, Dr. Anum, thank you so much for all the information that you've shared with us. In the end, if you would like to give any message related to the topic, or generally अगर आप कुछ बोलना चाहें. I would say कि जैसे इस साल का थीम है इंक्लूजन और अवेयरनेस के बारे में मैं बोलना चाहूंगी. they are beautiful people, they are beautiful children, they are as normal as anyone can be. सबसे पहले हम उनको discriminate करना अगर छोड़ दें, we should treat them as they are aliens or something else. We should not point them out in crowds or in public. That would be the best thing. Please उनको include करें, make them feel normal. Parents को let the parents breathe. They're already suffering through a lot. And let them feel normal. Okay. Thank you so much. That was a beautiful message, and thank you so much for joining us today and sharing
a lot of valuable information. Thank you, Dr. Anum. The pleasure is all mine. Thank you so much, Marwa.